करना क्या है इस पे? थैंक यू मधुरेंद्र। मैं सारे जो सवाल हैं पाकिस्तान पे मैं एक साथ लेना चाहूंगा जी। रवीश जी, मेरा सवाल यह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कुछ देर पहले ही ट्वीट किया है, पाकिस्तानी जनता के लिए कहा है कि कश्मीरी लोगों के लिए सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए आप कल 12:30 बजे निकलिए घरों से और खड़े होइए। तो इसको किस तरह से भारत ले रहा है, और दूसरा, क्या भारत की पॉलिसी में बदलाव हो रहा है बलूचिस्तान को लेकर आगे निकट भविष्य में हम देख सकते हैं? थैंक यू। प्रणय। पाकिस्तान ने आज एक नया मिसाइल टेस्ट किया है गजनवी। क्या भारत को इस बारे में पहले जानकारी दी गई थी मिसाइल टेस्ट के बारे में, और क्या भारत की प्रतिक्रिया है इस मिसाइल टेस्ट पर? थैंक यू। विनीता। Ravish, Pakistan is on a daily basis threatening to close the airspace for India. How would you like to react for that? थैंक यू। नवीन, हो गया आपका? और कोई? रेजा। Some of the recent protests we've seen outside Indian missions involved elements of Khalistani groups. Is this something that India has taken up with the countries where these protests have occurred? Missions. Any other question? जी यहाँ दीजिए। सर, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी 3 देशों की यात्रा पे गए और पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज किया गया, पाकिस्तान के पीएम ये कहते हैं कि हम लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं थी। क्या ये एयर स्पेस यूज करने के लिए क्या उनको बताया गया था, और किस तरीके के जो रिएक्शन उनके आ रहे हैं उसको देख के क्या लग रहा है? थैंक यू। जी इधर संजीव। Sir, do we still have any kind of bilateral business with Pakistan, please? थैंक यू। और कोई सवाल? So this is on Kashmir. Should I? Okay. The UN rights experts have urged India to end communications blockade in Pakistan, in Kashmir. Do you have a response to that? Okay. ये आखिरी सवाल होगा, उसके बाद। तो यूएनएससी को दोबारा से शायद चिट्ठी पाकिस्तान ने लिखी है, जिसमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष का जिक्र किया है कि वो भी कह रहे हैं कि वायलेशन हो रहा है वहां पर। ओके, थैंक यू। सबसे पहले आपका सवाल हिंदी में बोलूंगा कि जो आपने देखा होगा, जो वहां से हमारे पास बयान आ रहे हैं, जो ट्वीट आ रहे हैं, उसकी हम कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं। बहुत ही इरेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स आ रहे हैं पाकिस्तानी लीडरशिप की तरफ से, बाकी कमेंटेटर्स की तरफ से, और हम ये मानते हैं कि उनका जो बयान है वो हमारे अंदरूनी मामले में दखलंदाजी है। आपने देखा होगा कि बयानों में जिक्र हो रहा है भारत में जिहाद करने के लिए। उन्होंने काफी भड़काऊ ट्वीट्स भी दिए हैं इंडिया में वायलेंस पैदा करने के लिए। हमें लगता है कि इसका जो मेन मकसद है, ये एक ऐसा माहौल बनाना, एक अलार्मिंग सिचुएशन बनाना कि जो है हमारा बहुत ही जो हालात हैं बहुत ही अलार्मिंग है, और जो तथ्यों से बहुत ही परे है। अगर आप देखें अभी का सिचुएशन भारत और पाकिस्तान के बीच, उनका मकसद यही है कि ऐसा एक माहौल पैदा करना, और लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज है वो बिल्कुल अलग है। पाकिस्तान को यह समझना होगा कि दुनिया ने उनके इस चाल को समझ लिया है। अब वो ऐसे बातों से बेवकूफ बनने वाली नहीं है, और ऐसी बातें जो सिर्फ झूठ और मनगढ़ंत हैं। इसको मैं इंग्लिश में बोलना चाहूंगा कि वी स्ट्रांगली कंडेम द हाईली इररिस्पॉन्सिबल statements made by the Pakistani leadership on matters internal to India. These statements include references to jihad and to incite violence in India. This is intended to project an alarmist situation which is far from the ground realities. Pakistan needs to understand that the world has seen through their provocative and unsubstantiated rhetoric, which is based on lies and deceit. दूसरा सवाल आपने किसी ने somebody asked me about the missile test. Yes, we were aware about the test. As per the established
CBMs, we were informed about the test by Pakistan. Vinita, you asked me about वही मैं बता रहा हूं कि जो उनका मेन मकसद है ये प्रोजेक्ट करना कि सिचुएशन बहुत ही नाजुक है भारत और पाकिस्तान के बीच, और ये जितनी भी चीजें चल रही हैं, जो उनके बयान आ रहे हैं, जो ट्वीट्स आ रहे हैं, सब उसी डायरेक्शन में है। विनीता, हमने आई हैव नॉट हर्ड एनी रिपोर्ट्स, निदर परहैप्स देयर इज अ स्टेटमेंट बाय पाकिस्तान रिगार्डिंग क्लोजर ऑफ एयर स्पेस. What we understand is perhaps there were certain sectors which are temporarily closed. There have been notams which have been issued, and that too for a certain period. The reason for the closure, I think you will have to ask. Yes, I think I saw that statement. That's what I'm saying. You see, but there has been no statement from Pakistan confirming that they have closed it. What we understand is there was a notam which was issued for diversion of certain sectors or certain routes temporarily, and that reason that I think is something which Pakistan has to share. Somebody asked me about a letter which was written by the Minister of Human Rights. Are you talking about the Minister of Human Rights letter, Shireen Mazari? Yes, I think, basically there are two separate things. One is a letter which is written by Shireen Mazari, Minister to the President, I think, Human Rights Council. Frankly, I do not want to lend any credence to the letter by reacting to it. Let me put it very simply that the letter is not even worth the paper on which it is written upon. On the reports about some intrusion, I think you mentioned about some intrusion about Pakistani commandos in the Kutch area. I do not have any information in this regard. I think you have to ask the relevant authorities. I can only say that our security forces are always prepared to deal with any eventuality. On some international organizations trying to tell us how we should conduct our matters, we have indeed seen statements coming from few organizations on the human rights situation in Jammu and Kashmir. We completely reject such unsubstantiated statements. These are not based on facts. The facts are being presented on a regular basis by the district administration in Jammu and Kashmir. Yesterday you must have seen the press statement by the governor of Jammu and Kashmir, and I will take this opportunity to highlight some of the important steps or important measures which he has announced. He announced that 50,000 vacancies will be filled up in government departments. There was an announcement of a minimum support price for the apple crop, and in this context it was mentioned that NAFED has agreed, has committed 5,000 crores for procuring 50% of the apple production of the state. You are aware that the mobile phones have been opened in 10 districts of Jammu, 10 districts of Jammu as well as in the entire revenue districts of Kupwara and Handwara in the Kashmir Valley. You are aware that the landlines have been operating in Jammu and Ladakh. We have announced a phased opening up of landlines in the valley. There are certain manual interventions which are required, and that is the reason why it may take some time. The government has also announced that it would ensure the preservation and protection of the heritage, language and identity of the region. To take the democracy to the grassroots, it was also announced that the election to the block development councils would be completed by October. In terms of the restrictions which have been imposed and which people are talking about, out of 197 police stations, there are no daytime restrictions in 167. This is all over Jammu and Kashmir and Ladakh.
if I talk about Kashmir, out of 111 police stations, there are no daytime restrictions in 81 out of 111 police stations. So if we take the overall figure, we are looking at 85% of the police stations without any daytime restrictions. On education, 3,000 primary schools and 1,000 middle schools, they are functional. Yesterday, the governor also announced that high schools would open very soon. Banking and ATM facilities are operating normally. I would also like to take this opportunity to, through the Jammu and Kashmir administration, to rebut some reports in the media about shortage of essential drugs. It is a false report. We have reports from different hospitals in the valley. We have seen the stocks of various life-saving drugs, and not even in one instance any hospital has reported shortage of drugs or disposable items. This has been made very clear by the Jammu and Kashmir and Ladakh government through a press release. The local government is handling the situation with maturity and restraint. Not a single life has been lost. Not a single live bullet has been fired. The administration is putting all resources necessary to ensure that normalcy returns to the state as soon as possible. And we have noticed, if you take a look at the situation on the 5th and now, there has been a gradual but a positive improvement in the situation on the ground. Let us not compare the situation there with the situation in other parts of the country. Even in a situation which predates the 5th August, things were not normal to the extent where you can compare it to other cities in the country. But there is a commitment. There is also a commitment that the lives should not be lost, and that is what the government of the state government of Jammu and Kashmir is working towards. Is there any other question which I left out? Any other? जी कोई हाँ नहीं देखिए उसमें ऐसा है एयर स्पेस यूज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर राइट यू सी द एयर स्पेस हैज नॉट बीन क्लोज्ड नाउ व्हेनेवर यू हैव टू ट्रैवल व्हेनेवर देयर इज अ वीवीआईपी विजिट ट्रैवलिंग आउट ऑफ द कंट्री जी कोई हाँ नहीं देखिए उसमें ऐसा है एयर स्पेस यूज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर राइट यू सी द एयर स्पेस हैज नॉट बीन क्लोज्ड नाउ व्हेनेवर यू हैव टू ट्रैवल व्हेनेवर देयर इज अ वीवीआईपी विजिट ट्रैवलिंग आउट ऑफ द कंट्री. तो सुना अपने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार को, जिन्होंने सीधे सीधे पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया है. पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया था, उस पर भी उन्होंने कहा कि इस बारे में भारत को जानकारी थी. जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य है और सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि धीरे धीरे वहां पर हाई स्कूल्स खुले, क्योंकि 3000 प्राइमरी स्कूल्स खोल दिए गए हैं. ऐसा कहना था विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार का. यहां पर